Plate is ready for inspection. ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى तेरे सिवा रे मुजस्सम तेरे सिवा महबूब खुदा का कोई नहीं Subhanallah. I welcome you all to the most prestigious and the most awaited ceremony of the year. That is prize distribution ceremony
in which the students who got first position in various activities of the session 2023-24 will receive prizes. It is our privilege that the Honorable Chief Officer MCI Islamabad, Rana Muhammad Waqas Anwar, has very graciously accepted our invitation as a chief guest for today's ceremony. I welcome you, sir. May I have the permission of the chief guest to start the program, please? Sure. Thank you, sir. Now I request Madam Fatia Shameen, Principal CDA Model School, to come on stage for welcome address. So on the occasion of 37th Annual Day, 35 students will receive awards in the form of trophies, gold medal and cash. I congratulate the prize winners and their parents on their achievements, since this is the time in one's life that is cherished forever. So we not only impart bookish knowledge, but also polishing for potential of our students. They actively participate in co-curricular and social welfare activities. The school has earned a good name for the authority. Our students appearing in board exams have always shown excellent results. 100% success rate have so far been maintained, and it is all due to the dedication and devotion of our teachers. Their services cannot be paid. They are always striving to keep the standards high. Long illegal siege, 50 years of occupation, displacement and evictions. As many think that this genocide has been going on since October 7, 2023. Little do they know that it has been over 75 years of the persecution of the people of Palestine. Ghazni Health officials say that war has killed over 10,000 people, including more than 4,000 children. The territory is also desperately low on water, fuel, and supplies, as Israel has rejected humanitarian pauses and limited the amount of aid that can enter. This is not a conflict. These are not clashes. This is not an Arab issue. This is not a Muslim issue. This is not a Christian issue. This is not a Jewish issue. This is a human issue. Be human and help humanity prevail. This message has been conveyed by students of our junior section, showing their solidarity with the Palestinians. So put your hands together for students of junior section. सिर्फ लाशें लाशें मेरी गोद में, सिर्फ लाशें लाशें मेरी गोद में। कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ, कोई पूछे मैं क्यों इतना गमगीन हूँ। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ। अब न रोएंगे और ना ही मुस्काएंगे, सिर्फ नगमे शहादत के ही गाएंगे। अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को दो, अपना बैतुल मुक़द्दस बचाने को दो। मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे, मेरे बच्चे अबाबील बन जाएंगे। मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ, मैं फलस्तीन हूँ।
और मेरे लिए बड़े एज़ाज़ की बात है कि मुझे आज यहाँ इनवाइट किया गया और इतना ज़बरदस्त और इतना अच्छा आज की अरेंजमेंट थी, आज का फंक्शन था। मेरी तरफ से तमाम टीचर्स को, पेरेंट्स को और ख़ासकर जो प्रिंसिपल है मैडम फातिया, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छा अरेंज किया गया था इवेंट और बच्चों का टैलेंट देख के, बच्चों की अचीवमेंट्स देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और लिमिटेड रिसोर्सेज में इतने ज़्यादा बच्चों के साथ आई एम श्योर कि स्कूल की जो क्वालिटी है वो मेंटेन रखी गई है और मुझे आज नज़र भी आया और मुझे बहुत खुशी हुई है। मेरी मैडम से काफ़ी ज़्यादा डिस्कशन हुई स्कूल के कुछ इश्यूज़ के ऊपर और मैंने उन्हें यकीन दिलाया कि इंशाल्लाह हम ना सिर्फ उन इश्यूज़ को एड्रेस करेंगे बल्कि स्कूल के सिस्टम में इम्प्रूवमेंट भी लेकर आएंगे। जितने भी पेरेंट्स हैं जो ट्रस्ट करते हैं CDA मॉडल स्कूल में, उनके टीचर्स और प्रिंसिपल में आई एम श्योर कि उनकी एक्सपेक्टेशंस होंगी और मैं उनकी एक्सपेक्टेशंस को सुनना भी चाहूँगा कि वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि स्कूल को किस तरह और फर्दर इम्प्रूव किया जाना चाहिए। Honorable Chief Guest, Chief Officer MCI Mr. Muhammad Waqas Anwar, Guest of Honor Mr. Kamran Bakht, DG Admin, HR, MCI, teachers, students, and respected parents, Assalamu alaikum. It is my proud privilege to propose vote of thanks on the behalf of the Student Council Session 2023-24. Our sincere thanks to our esteemed guest for gracing this occasion. We would like to thank Madam Fabia Shamim, the principal of CDA Model School, who continues to work with zeal and zest. Lastly, I am thankful to all the worthy guests for sparing their precious time to encourage us. Thank you so much.